fresh political storm has erupted in Bengal after a local BJP leader was shot and killed on Sunday evening. The BJP has alleged that the ruling Trinamool government is responsible for the incident. But the controversy has taken a new twist after Bengal Governor Jagdeep Dhankar has intervened, called for a CBI inquiry and said that Bengal is a lawless state. Take a look. Exclusive CCTV images of the firing on Bengal BJP leader Manish Shukla. Multiple bike-borne attackers accosted and gunned down the BJP leader a few hundred meters from a police station. Shukla sustained bullet injuries in the head, chest and back. महामहिम से हमने सीबीआई की जांच मांगी है क्योंकि ये हत्या ओपन प्रकाश में हुआ है, ठीक है? बस मानसिक स्थिति क्या है इस समय जो आपने देखा है, जो कहेंगे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है सत्ता में, उस पर क्या कहेंगे आप? अब हम कुछ कह नहीं सकते कारण कि तृणमूल की सरकार से हमको आशा नहीं है. The brazen murder on Sunday at around 8:30 p.m. in Bengal's Titagarh sparked unrest in the area, with the BJP calling a bandh and protest, accusing the TMC government of plotting the murder. Shukla had earlier dumped the TMC to join the BJP. वो तो चाह रहे हैं कि जो हुआ गया वो सब रफा दफा करो. अब पुलिस उसी काम में जुट गई है. इतना बड़ा मर्डर हुआ है, पुलिस प्रशासन के सहयोग से हुआ है. इसमें इसकी भूमिका संदिग्ध है. अब वो रफा दफा करने में जुटी हुई है, उसके सबूतों को मिटाना चाहती है. But state BJP chief Dilip Ghosh scored a self-goal by comparing the Bengal situation with Mafia Raj and BJP-ruled UP and NDA-ruled Bihar. দেখুন, পশ্চিমবাংলাটা ধীরে ধীরে উত্তরপ্রদেশ বিহারের মতো মাফিয়া রাজের দিকে চলে যাচ্ছে. প্রকাশ্যে দিবালোকে একজন উকিল, সে প্রাক্তন কাউন্সিলর, তাকে যেভাবে থানার সামনে চায়ের দোকানে এসে চেনগান নিয়ে ব্রাশ ফায়ারিং করা হয়েছে, তার গায়ে 12টা গুলি লেগেছে, মাথাতেই 4টে, ওখানেই প্রায় মারা গেছে. যুবক নেতা, ওখানে জননেতা বলা যায়, যারা যারা অনুগামিতা, তাকে যেভাবে প্রকাশ্যে মারা হলো, তার মানে পশ্চিমবাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু আছে বলে আমার সন্দেহ আছে. The TMC, however, claims that internal squabble in the BJP is responsible for the murder. যে ঘটনা ঘটুক না কেন, সব ঘটনার পেছনে আপনারা জানেন বিজেপি তারা সবসময় মনে করেন তৃণমূল হচ্ছে তার সঙ্গে, তৃণমূলের নামটা তারা খুঁজে বার করে, এটা সবাই জানে. এটা এনকোয়ারি হচ্ছে, পুলিশ আছে সেখানে, পুলিশ এনকোয়ারি করবে আর নিশ্চয়ই এনকোয়ারিতে সঠিক. After protests and a rap from the Bengal governor Jagdeep Dhankar, the police made 2 arrests but claimed possibility of personal rivalry behind the murder. The BJP says as many as 115 party workers have been killed in Bengal since 2014. The political bloodletting may echo in next year's assembly polls. Every time a political murder takes place in the state of West Bengal, the battle escalates between TMC and BJP. On one hand, the allegations have always been that the administration as well as the political party in the state is hand in glove with every political murder. However, the state denies it completely. But amidst all this, it seems to be an escalation of the fight up to 2021. With camera person Tapas Berry and Deepak Devnath in North 24 Parganas, this is Manogya Loiwal in Kolkata for India Today.